There is seemingly no end to the debate over the Uniform Civil Code as the chorus now is growing on both sides. After Prime Minister Modi's emphatic pitch, now former Vice President of India, Venkaiah Naidu, has also come out in favour of this law. He has said that India needs a Uniform Civil Code for social harmony as well as economic and gender justice. A showdown is expected in the upcoming session of Parliament, but more and more regional satraps are taking a stand against the law. After the Akali Dal, the AIDMK, the DMK and even the NDA's very own partners in the northeast, Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan has now become the latest to take a stand against the rollout of the UCC, calling it a bid to trample on minority rights. He even accused the Congress party of failing. He accused the Congress party of failing to shed its ambivalence in this matter. Any concept of imposing majoritarianism, it is against democracy. Majority rule is a democracy, but majoritarianism not majority rule. So other opinions also should be respected. Now BJP is doing it, insisting it, because this is their urgent need. Next election, if they win, they have their life tonic is communal division. So because of the next Lok Sabha election, they are raising it, fanning it. Whether they do or not, I do not know. But campaign will go on to rouse the Hindus against Muslim. ये समय नहीं है. अभी हमारा समाज उस मनस्थिति में नहीं पहुंचा है कि सारे देश के सारे नागरिक अपनी पारंपरिक प्रथाओं को और कानूनों को छोड़ के एक किसी कानून में बंध जाए. वही स्थिति यूसीसी की है, जिसपे गोलवलकर जी का भी हवाला देते हुए कपिल सिब्बल जी ने एक कार्यक्रम में टीवी का देख रहा था. उन्होंने कहा था कि स्वयं गोलवलकर जी में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये राय व्यक्त की थी कि यूसीसी नहीं होना चाहिए. हमारे देश में भिन्नता है, हमको उस भिन्नता को बरकरार रखना चाहिए और उस भिन्नता में सौहार्द निर्मित करना चाहिए. But beyond the war of words, let's decode the facts and myths surrounding the Uniform Civil Code. One of the myths is that the UCC will impact how you pray, how you eat, or how you dress. The fact is that no law anywhere in the world can prescribe religious practices, food habits, or dress codes. There's also the myth that the UCC will adversely affect cultural diversity. The fact is that the UCC cannot regulate languages, festivals, customs, rituals that people undertake in different parts of the country. There's also a myth that the Hindu law on succession, on inheritance, on divorce, etc. will be imposed on other communities as well. The fact remains that the Constitution guards against any such imposition of one set of rules on all classes of citizens. There's also the myth that the UCC will dislodge religious practices associated with marriage, like nikah or the Saath Fere or church weddings. The fact is that these ceremonies can and will happen. The law will prescribe recognition of these ceremonies. There's also the myth that a secular country cannot have a uniform civil code. The fact is that most secular democracies, the United States, the United Kingdom, you name it, across the world, most Western democracies have a common civil code. But that notwithstanding, the All India Muslim Personal Law Board has taken a stand against the UCC and is circulating a link appealing to everybody who are its members to give their opinion, as the Law Commission is inviting the views of the public. The organization has openly called this a majoritarian bid to derail minority rights. आप सब जानते हैं कि लॉ कमीशन ने यूसीसी के सिलसिले में सभी लोगों से राय मांगी है. तो इस सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक लिंक जारी करके सबसे अपील की है कि इस सिलसिले में अपनी राय बआसानी भेजें. उसी को देखते हुए जो कि जुमा है, तो जुमे के मौके पर बड़ी तादाद में मुसलमान मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने आते हैं. तो मस्जिदों के इमामों से अपील की है कि जुमे के खुतबे में लोगों से ये ज़रूर अपील करें कि पर्सनल लॉ बोर्ड की इस लिंक के ज़रिए से या उसके अलावा भी अपनी राय लॉ कमीशन तक यूसीसी के सिलसिले में ज़रूर पहुँचाएँ. In fact, in a 100-page counter to the Uniform Civil Code, the All India Muslim Personal Law Board has argued that morality of the majority
is not above the rights of the minority. This is the exact phrase that's been used by the AIMPLB. The Uniform Civil Code remains an enigma. The Constitution is not uniform as it gives special rights to different classes of citizens. Personal laws for minorities are prudent for national unity, and personal laws are directly linked to Muslim identity. The Uniform Civil Code will lead to a loss of the Muslim identity. Unity is preserved if personal laws are allowed to thrive. But all eyes are on the draft proposal that's come in from the Uttarakhand government. In fact, Chief Minister Pushkar Singh Dhami held a meeting with both Union Home Minister Amit Shah, as well as, of course, he met with the Prime Minister. The BJP is banking on the Uttarakhand state draft as a launchpad for an all-India rollout of the Uniform Civil Code. CNN News 18 has accessed details of the UCC draft in Uttarakhand. Let's take you through some of the salient points. Now, if we look at the age for marriage for girls, it is to be increased to 21 years for all girls across sections of society from the current 18 years. On the registration of marriage, the draft suggests that making of the registration of marriages has to be mandatory. So even if you have a temple ceremony or a Gurdwara ceremony, you still have to get your marriage registered by the local authorities. On live-in couples, there will be no ban on live-in couples, but the provision to legalize it will be made. It will be mandatory for live-in couples to inform their parents and also to fill a declaration form. If a child is born, then he or she will not carry the illegitimate child tag and will get the name of the parents as well as all rights that a regular couple and a child thereof gets. On adoption, it says that there can be a provision on the basis of religion even in the process of adoption. The proposed UCC draft mentions discontinuing the practice of halala and iddat, terms that are commonly used while settling marriage disputes among the Muslim community. Meanwhile, the UCC also bans the practice of polygamy, the custom of having more than one wife, a feature that is allowed only for Muslim marriages. On divorce, the draft calls for equal rights irrespective of faith. Now, the BJP is hoping that this draft will be a game changer for their pro-UCC agenda and arm the party for the showdown that's ahead in 2024. CNN News 18 also spoke to the head of the Parliamentary Panel on Law and Justice, who heard this UCC matter just earlier this week, BJP MP Sushil Kumar Modi. July 4th, you chaired the meeting of UCC, and there you raised the question of the feasibility of UCC in tribal areas, including Northeast. So could you please elaborate on that? नहीं, देखिए, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के किसी विषय पर सार्वजनिक चर्चा नहीं की जा सकती है, तो इसलिए उसका जो प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के अंदर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में क्या हुआ वो गोपनीय होता है और उस पर कोई भी मीडिया के साथ कोई भी चर्चा नहीं हो सकती. Congress leader Manish Tiwari has said that Uniform Civil Code is actually a common civil code and it is antithetical to the Indian Constitution. नहीं, देखिए, मनीष तिवारी क्या बोलते हैं वो एक अलग बात. अभी तो कांग्रेस ने इस पर कोई स्टैंड ही नहीं लिया है. कांग्रेस ने ये कहा कि पहले वो ड्राफ्ट आने दीजिए, तब उसके बाद उस पर विचार करेंगे. तो मुझे लगता है कि लोगों को गलतफहमी, बहुत तरह की गलतफहमी है, तो वो गलतफहमी दूर हो जाएगी जब ड्राफ्ट सामने आएगा. तो इसलिए लोग भ्रम पैदा न करें. जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस प्रकार का बयान दिया है, प्रस्ताव दिया है, तो इसलिए मुझे लगता है कि जल्दबाजी में किसी को रिएक्ट नहीं करना चाहिए. लोगों को जो अपना सुझाव देना है वो दे लॉ कमीशन को. लॉ कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद उनका कोई ड्राफ्ट आता है, तब उस पर रिएक्ट करें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा. So, खालिद रशीद जो महली हैं, वो मुस्लिम लॉ बोर्ड के चेयरमैन मेंबर भी हैं. He has strongly opposed UCC. कैसे आप आज भी बरेली में एक ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा है कि पहले खुतबा जो दे उसमें UCC की खराबियां बताएं और ये भी बताएं कि हुकूमत किस तरह की शरीयत पर हमला बोल रही है और हमें कानून के दायरे में रहकर इसका विरोध करना है. ये बरेली में आज बोला है. क्या बोला मुझे नहीं मालूम, कौन है, मैं भी उनको जानता भी नहीं हूँ. लेकिन दुनिया के अधिकांश देशों के अंदर एक ही सिविल लॉ है. अगर कोई भारत का मुसलमान अगर जाता है अमेरिका में, यूके में, यूरोप में, तो वहाँ क्या मुस्लिम सिविल लॉ अलग है और अमेरिकन के बाकी क्रिश्चियंस के लॉ अलग हैं क्या?
तो अगर अमेरिका में जाकर आपको कोई दिक्कत है तो भारत में क्यों दिक्कत हो रही है? और खास करके वैसे कानून जो डिस्क्रिमिनेट करते महिलाओं के प्रति, एक शादी होगी कि एक से ज़्यादा शादी होगी, तलाक के बाद मेंटेनेंस होगा कि नहीं होगा, तो ये तो ऐसी चीज़ें कि स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए। यहाँ तक कि हिंदुओं के अंदर भी बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो महिलाओं के प्रति विभेद पैदा करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो चाहे हिंदू के कानून हो या मुसलमान के कानून हो, वैसे कानून जो जेंडर डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। ये तो संविधान का निर्देश है, नीति निर्देशक सिद्धांत में है। चलो कौन मुल्ला मौलवी क्या बोलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और लोगों को इंतजार करना चाहिए। और मैं मुस्लिम समाज से भी यही कहूँगा कि इंतजार करें, और जब दुनिया के बाकी देशों में आ सकता है, यहाँ तक कि पाकिस्तान के अंदर 4 शादी पर रोक है, वहाँ पर एक व्यक्ति 4 शादी नहीं कर सकता। तो अगर वहाँ 3 तलाक पर रोक है, 4 शादी पर रोक है पाकिस्तान में, तो यहाँ अगर कोई ऐसा कानून बनता है तो धर्म के आधार पर किसी को विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। सर, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी मिले थे होम मिनिस्टर अमित शाह से, और उन्होंने कहा कि जो उत्तराखंड का यूसीसी है दैट विल बी अ टेम्पलेट फॉर द यूसीसी ऑफ द कंट्री। मुझे पता नहीं उन्होंने क्या कहा।